Assalamu alaikum. As you all are aware that the curriculum of grade 9 is going to be changed from next session, so this is the book they have introduced and all the contents have changed now. So these are the contents they have included in their curriculum now. The first one topic is Treaty of Hudaybiyah. The second is a visionary leader. The third is the yearling. The fourth is the in spite of war. The fifth is empowered woman. The sixth one is cry for clean water, a plea for urgent action. The seventh one is Princess September, and these are the all contents they have introduced this year. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. As you all know, the syllabus are going to be changed for the academic session 25 to 26 for the 9th class. So today I am going to share new content of biology book. So these are all the new content of biology book. In this syllabus we will learn about introduction to biology in first chapter. इसमें हम फर्स्ट चैप्टर में मेजर फील्ड्स पढ़ेंगे बायोलॉजी की, इसके कैरियर्स पढ़ेंगे और इसकी कोलैबोरेटिव फील्ड जो साइंस की है वो पढ़ेंगे. इस पे लास्ट टाइम जो था द साइंटिफिक मेथड इन बायोलॉजी और लॉज और थीरीज़ वगैरह ये सेकंड चैप्टर में था, लेकिन अब ये थीरीज़ लॉज और साइंटिफिक मेथड फर्स्ट चैप्टर में ही इंक्लूड हो गई हैं. देन हम द नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 2 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यूज़, ऑर्गन्स और सिस्टम वगैरह के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. देन चैप्टर नंबर 3 इज़ सेल स्ट्रक्चर. सेम सेल और इसकी एनिमल्स और प्लांट्स के सेल स्ट्रक्चर्स को हम चैप्टर नंबर 3 में रीड करेंगे. चैप्टर नंबर 4 इज़ सेल साइकिल. सेल के प्रोसेस को देखेंगे, माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस को चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे. द चैप्टर नंबर 5 इज़ बायोमालिक्यूल्स. बायोमालिक्यूल इसमें हम बायोकेमिस्ट्री और मालिकुलर बायोलॉजी और कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन के वगैरह के बारे में स्टडी बायोमालिक्यूल्स में करेंगे. सो द चैप्टर नंबर 6 इज़ एंजाइम. इसमें हम एंजाइम की स्टडी करेंगे. और चैप्टर नंबर 7 इज़ बायो एनर्जेटिक्स. इसमें हम एटीपी और फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी करेंगे. चैप्टर नंबर 8 इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट्स देखेंगे. और द चैप्टर नंबर 9 इज़ रिप्रोडक्शन प्लांट्स. हम प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इनकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन को देखेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में देखेंगे. द चैप्टर नंबर 10 इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन. And the chapter number 11 is evolution. So these are all about the new content of 9th biology book. Best of Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. As you all know, the syllabus are going to be changed from the academic session 25 to 26 of 9th class. So today I am going to share new content of computer science book. So these are the new content. In this book we have total 7 chapters. First one is computer system. In this chapter we will learn about system types and architecture, software and programming language and information network. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आर्किटेक्चर्स ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड अबाउट नेटवर्क्स लाइक नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड लेयर्स. इन सेकंड चैप्टर computational thinking and algorithms. In this chapter we will learn about how to solve problem, how to think logically and what are the algorithms. In third chapter programming fundamentals. Like previous book में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ HTML थी, बट इस बुक में हमारे पास लेटेस्ट लैंग्वेजेस भी हैं, जावास्क्रिप्ट, अरेज, ये सब हम इस बुक में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर इज़ डाटा एंड एनालिसिस. ये चैप्टर हमारे पास पिछली बुक में नहीं था, ये न्यू कोर्स में ऐड है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डाटा क्या होता है, डाटा की कैसे हम गैदर करते हैं, डाटा को एनालाइज कैसे करते हैं हम, एंड व्हाट इज़ बिग डाटा. नेक्स्ट चैप्टर इज़ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस. इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है. नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग. इसमें हम इश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट आर एथिक्स एंड व्हाट आर द एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड हाउ टू हैंडल सिक्योरिटी यूजिंग कंप्यूटर. लास्ट चैप्टर इज़
एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एजेस, इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द बिजनेसेस एंड हाउ टू डेवलप बिजनेस स्किल्स एंड व्हाट tool we can use for the business. So these are the content of new computer science book. Thank you so much. Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. As we all know that Government of Punjab has announced that the book of chemistry of class 9 has changed. So in this video I'm going to show you the new book of chemistry of class 9. So this book is consisting on 17 chapters, starting from nature of science, matter, atomic structure, chemical bonding, stoichiometry, oxidation and reduction, thermochemistry, chemical equilibrium, acid and base, periodic classification of elements, atomic structure, environmental chemistry, water, basic of organic chemistry, biochemistry, data handling, chemical analysis. Thank you. Assalamu alaikum everyone, I hope you are all good. As you all know, syllabus are going to be changed from academic session 2025 to 2026 of 9th class. So today I am going to share new content of physics book. So these are new content. In this we have total 11 chapters. So chapter number 1, nature of physics. In this chapter we study about the exploring universe through physics, fundamental concept in physics, research, science, technology and engineering. In chapter 2, foundation of measurement in physics. In this chapter we study foundations of physics, mastering SI units, prefixes, analysis, understanding measuring concept, techniques, measurements of volume of liquid and solids, data interpretations and rounding of calculations. In chapter 3, scalars and vectors. In this chapter we can understanding and identify the scalar and vector quantities. In chapter 4, kinematics. In this chapter we study about the motion, various type of motion, concept of distance, displacement, speed, velocity and type of accelerations, universal speed limit. In chapter 5, dynamics. Dynamics have divided into 4 parts. First part we discuss the mass, weight and gravity. In second part we discuss the forces and Newton's law of motion. And in third part we discuss the friction and how to differentiate between the rolling and sliding frictions, effects of friction. And in part 4, momentum. In this content we understanding the momentums, Newton's second law in the term of momentum. In chapter 6, torque and stability. In this chapter we discuss the principle of parallel force, turning effects, center of mass, center of gravity and motion of rotating bodies and circular motion, planetary motions. In chapter 7 we discuss the work, energy and power, concept of energy, fundamental of work and energy, kinetic energy, potential energy and efficiency in energy and power systems. And in chapter 8 we discuss the deformation of solid, any forces and deformations, Hooke's law and spring constants. In chapter 9, pressure, we discuss the pressure and its variation, atmospheric pressure, pressure in liquid, Pascal law. And in chapter 10 we discuss the science of temperatures, understanding density and calculation, temperatures and internal energy, temperature measurements, characteristics of thermometers. And in the last chapter we discuss the magnetisms. In this chapter we discuss the magnetic poles, the interaction, exploring magnetic field and magnetic materials and non-magnetic materials, and understanding magnetisms in materials, earth magnetic field. In these all 11 chapters we discuss these content. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जमात नाहम के लिए 2025 और 2026 के लिए उर्दू का नया सिलेबस तरतीब दिया है। हमारे पास किताब का मवाद मौजूद है। ये असबाक इस किताब में शामिल हैं। पहला हिस्सा नसर और दूसरा हिस्सा नज़्म और ग़ज़लों पर मुश्तमिल है। जमात नाहम में हम प्री 9th को ये असबाक पढ़ाएंगे।